क्वेश्चन देखो। सर ने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 सीबीसी का। If the quadratic equation px square minus 2 root 5 px plus 15 equal to 0 has two real roots, then find the value of p. रियल रूट्स मतलब क्या लेना है? टू रियल रूट्स है ना, सो टू रियल रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्वेश्चन क्या है? टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स। सो इक्वल रूट है तो क्या आएगा? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। दैट इज अ कंडीशन। डिस्क्रिमिनेंट का इक्वेशन क्या है? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो हमारा इक्वेशन में a का वैल्यू p है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x है, सो माइनस 2 रूट 5 p एंड c इक्वल टू प्लस 15। सो इसमें डालना पड़ेगा आपको। बी स्क्वायर इज माइनस 2 रूट 5 p का स्क्वायर माइनस 4 into a is p, c is 15. So b square minus 4ac equal to 0 for real and equal roots. Real and distinct roots चाहिए तो d should be, d is greater than 0 for real and distinct roots. Real and equal roots, d should be equal to 0. So put किया तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, so 4 into 5 20, 2 into 2 square 20 p square minus 4 into 15, that means 60 p equal to 0 आएगा। so इसमें से 20 p कॉमन लिया तो p minus 3 equal to 0 आएगा। so it can be, p can be equal to 0, p can be, p minus 3 can be equal to 0. So p equal to 0 or p equal to 3 आएगा, but we cannot put p equal to 0. Why? Because if you put p equal to 0, this equation become a constant polynomial. It cannot be a quadratic equation. So because when you consider quadratic equation, ax square plus bx plus c, if it is quadratic equation, a should not be equal to 0. That is the condition. So if you put p equal to 0, this become a constant only, not a quadratic equation.
So if you want to get quadratic equation, then we should get P equal to 3. Even though there is 2 solutions for P, we should choose P equal to 3 because हमारा equation should be a quadratic equation. Another question. If minus 5 is a root of the quadratic equation, if minus 5 is a root of the quadratic equation, 2x square plus px minus 15 equal to 0, and the quadratic equation p into x square plus x plus k equal to 0 has equal roots. Find the value of k. Minus 5 is a root of the quadratic equation. That is the first quadratic equation. And the second quadratic equation has equal roots. Then you have to find out the value of k. First of all, minus 5. Minus 5 is the root of the quadratic equation 2x square plus px minus 15 equal to 0. That means x is equal to minus 5. If you put, it should satisfy the equation. So 2 into minus 5 का square plus p into minus 5 minus 15 equal to 0. So क्या आएगा? 5 का square 25 into 2 50, 50 minus 5p minus 15 equal to 0. इसमें से आपको मिलेगा 50 minus 15 equal to 35, 35 equal to 5p आएगा. इसमें से आपको क्या मिलेगा? 35 by 5 equal to 7. So that is the value of p. So this p should be substitute in the second equation. So second equation क्या है? p into x square plus x plus k equal to 0. If you put 7 here, 7x square plus 7x plus k equal to 0. Second equation में क्या दिया है? Equal roots. Equal root है तो क्या आएगा? Discriminant equal to 0 आएगा. So ये इक्वेशन को जनरल इक्वेशन में कंपेयर किया तो a इक्वल टू 7 मिलेगा, b इक्वल टू 7 मिलेगा, c इज इक्वल टू k मिलेगा. So d equal to 0 means b square minus 4ac. d equal to 0 implies equal roots. b square minus 4ac equal to 0. b square क्या है? 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 minus 4 into a is 7 into c is k. So आपको क्या मिलेगा? 49 equal to 4 into 7 into k. So इधर 7 7 कैंसिल किया तो 7 equal to 4k. Therefore k equal to 7 by 4 आएगा. So discriminant equal to 0 is the condition for equal roots. Discriminant greater than 0 is the condition for real and distinct roots. Distinct roots. देखो, if you draw a quadratic equation,
ax square plus bx plus c, then if the value of a is greater than 0, there are three possibilities. Graph can come like this. Graph can be like this. And another graph can be like this. In this case, we know that in the number line, there are two crossings. So this is alpha, this is beta. Here alpha will be equal to beta. Either root to milega, but it is not, in the third case, it is not touching. So real roots possible nahi hai. Real root matlab kya hai? Where the हमारा curve crosses the x-axis or touches the x-axis, then only we will be able to get real values of x. So in this particular case, we are getting two crossings, two distinct crossing. That means alpha and beta are distinct values. So ये कौन सा possibility है? D greater than 0 है. Either only touches at only one point. Quadratic equation का degree 2 है. There should be two roots. So either two roots आएगा but equal roots आएगा. So ये case क्या है? D equal to 0. Imaginary roots or not real roots? Imaginary roots. So this is the case for if a is greater than 0. If in the same equation ax square plus bx plus c equal to 0, if be drawn in downward like this, एक आएगा, दूसरा ऐसा आएगा, touches the x-axis, another one like this. So either also same thing, either the graph touches two different points, alpha and beta. Here touches only at one point, therefore alpha equal to beta, either no real roots or imaginary roots. So in this case, d will be greater than 0. Here d will be equal to 0, either d will be less than 0. These are the, no. So in quadratic equation, coefficient of x square greater than 0, the graph will be upward, opening towards the upward direction. If coefficient of x square is less than 0, the opening of the graph will be downward direction. Clear? Find k if the difference of roots of the quadratic equation. Find k if the difference of the quadratic equation, if the difference of the roots of the quadratic equation x square minus 5x plus 3k minus 3, 3k minus 3 equal to 0 is 11. ये कैसे करेगा?
The equation. If the difference of the roots of the equation, that means alpha minus beta is given as 11. बट हमको क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? सम ऑफ द रूट्स क्या है? 1 है, बी का वैल्यू बी बाई ए मीन्स क्या आएगा? माइनस -5 by a is 1, so it will become +5. अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? c by a ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, c by a. so c क्या है? 3k minus 3 divided by a is 1, so it will become 3k minus 3. so अल्फा माइनस बीटा कैसे करें? अल्फा माइनस बीटा का रिलेशन क्या है? अल्फा माइनस बीटा the whole square is equal to alpha plus beta the whole square -4 अल्फा बीटा है. सो दोनों साइड में रूट किया तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा. इधर सब्स्टिट्यूट करके देखो. अल्फा माइनस बीटा 11 है ना, 11 पुट किया. अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? हमने क्या किया है? अल्फा प्लस बीटा 5 है, सो 5 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है? 3k minus 3. सो दोनों साइड में स्क्वायर किया तो 11 का स्क्वायर 121 आएगा. इधर स्क्वायर चला गया तो 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 इंटू 3 12k, 4 इंटू 3 माइनस प्लस 12 आएगा. सो 121 25 प्लस 12 क्या आएगा? 37 है ना. सो -37 इक्वल टू -12k आएगा. सो 121 माइनस 37 करना है. -84 equal to -12k, so k become -84 divided by 12, so 42 6 आएगा. Then 7 into 6 and 1 into 6, answer will be -7. इसमें कुछ नहीं है. This formula you should be, from this you will be able to get. Relation is important. Algebraic identity का अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा चाहिए. इसमें जस्ट पुट करना है, आंसर मिल जाएगा.
Another question. The harmonic mean. Roots of the equation. The harmonic mean of the roots of the equation x square minus 8x plus 4 equal to 0. If you have two numbers alpha and beta, arithmetic mean is represented as alpha plus beta by 2. Geometric mean is represented as square root of alpha plus beta by 2. Geometric mean is square root of alpha into beta, and harmonic mean is 2 into alpha beta divided by alpha plus beta. So इसमें से आपको क्या मिलेगा? A equal to 1 मिलेगा, B equal to -8 मिलेगा and C equal to 4 मिलेगा. -8 by A, C by A. C क्या है? 4. A क्या है? 1. So harmonic mean alpha beta is 4 and alpha plus beta is 8. So answer is 1. So this form by alpha plus beta.